the syllabus, and term 2, thus unit 2, we have completed this dictionary. Okay, now we will have to start this introduction to Python modules. या मैं आपको थोड़ा सा करा भी चुका हूँ. I just want to recall all such things because this is especially given in the syllabus. And using from statement, importing math module में ये सब functions हैं, random module में ये 3 functions हैं, और statistics module में ये 3 functions हैं. तो ये आपको मैं अब करवाने जा रहा हूँ. Okay, so let's start with this one. Before that, let me talk to you about the homework that was given yesterday. So उसमें एक क्वेश्चन है आपको, वो मैं आपको और सोचता हूँ कि एक बार समझा दूं. वो क्वेश्चन था आपका, that was the question. Just see. Yes, this was the homework given. So you see, this question number 1 and 2, I think you can do well. Means there is no problem in this. Question number 3 also you can do very easily because that also we had discussed in our class. Now this is question number 4, especially I have given to you. Write a program to check if a dictionary is contained in another dictionary. Means we have to check that D1 is contained in D2. Means this you see 1:11, 2:12, and 1:11, 2:12. This is to be there. So I will not explain you the coding exactly. I want to just give you the hint what you do, because you can't check it because there is no function exactly to check two dictionaries. Okay, what you have to do, you have to use the nested loop. First, one by one, you check. First loop you take for D1. Okay, now for D1 you check the keys. First first loop you take for D1 for I is equal to, means I in D1. Now next second loop you have to take for D2. So for each value of I, it will check each one in J. Okay, so you compare them and you count it, how many times it is there. Now after that you will have to check the values also along with that I. So the keys you check one with each key of D2. Each key of D1 is to be checked with each key of D2. Similarly, each value of D1 is also to be checked with each value of D2. Means simultaneously you have to check two conditions. You have to use that logical operator and you have to use the condition, and then you have to decide whether D1 is contained in D2 or not. Okay, so I gave you the hint for this fourth question. You try it and let me know. All right, so this I'm closing. I am if you will have any doubt, I will explain you, but I want you to take the interest and do on your own rather than depending on me to solve the question, because it will help you to make proper logic and it will help you to do the coding. Okay, so hope you have understood what to do. Now next, I am just coming to the topic, that one I am closing it. This was the syllabus. Now I'm opening it. Now you see the screen is available to you. First, we will see the random module. Okay, again I am explaining it to you because it's especially given in the syllabus. All right, so you watch. See, random module is having, see, first of all, what is module? Module is a particular file
which is available in the library of Python. Okay, so Python has a module, namely random, that provides random number generators. A random number, in simple words, it is a number that you can't predict. Any number will be generated by this module. But what is a module? Module is a particular file of having the extension same .py, but it is available in the library of Python Python installation. Okay, so from that library we can import the modules into our main program, and we will be able to make use of all the available functions of that module. Okay, so first you see the module name is random, so we will have to import it. Okay, we will have to import it. Import random. Okay, now it is having three functions. First function is random function, second function is rand int, and third function is rand range. Okay, random module is having three functions. Okay, now you see what random function does. It returns a random floating point number from 0.0 to less than 1. Okay, it will never reach to 1. So it will generate a random number, floating number, and that maybe the numbers will be infinite. Okay, you can't count them. So all infinite numbers may be generated, any one, with the help of random module, but it must be less than 1, and it is not less than 0. So from 0 to less than 1 means 0.999 is also can also be a number, but it can't be 1. Okay, now next function is randint. In randint, it generates a random number from any number lying between a and b, including a and b both. Okay, so I think it's clear. What is rand range? Rand int and rand range is having the same thing, except one difference, that is in rand range function we have this step. Okay, so it returns random numbers from range start to stop with step value. Got it? So step value means, if suppose a start number in rand range, suppose I am using here rand range. Okay, now I am taking here 10, 20, 2. Okay, so the numbers generated by this rand range, any random number can be generated, and the numbers are like this: 10, 12. Okay, then step 2, 14, then 16, then 18, and then 20. So any number, because this step 2 is there, so 10, 12, 14, 16, 18, 20, any of these numbers can be generated with the help of this rand range function that I have used like this. Okay, but if I write here comma 1, so it will work exactly the same like rand int. Okay, it will work exactly like rand int. So if I write here rand int, and I am writing here 10, 20. Okay, so here both the functions will work same. Here both the functions will work same, because here the step value is 1 only, and here also by default the step value is 1. Okay, so hope you have understood this thing: random, randint, and rand range. Okay, now on the basis of it, the output questions will be asked to you. Now next is this I have explained you. Okay, rand range function, ये भी आपको समझा दिया. Rand range, see here rand range to generate a random number in the range 0 to stop value. See, one more point is here. Suppose here I have written in rand range 45. So initial value means start value is considered 0. So it will generate any random number from 0 to 45. Okay, 0 to 45. But in randint, it is compulsory that you have to write there 2 arguments. Okay, so here
you have understood that in rand range single parameter can also be used, right? Now next is rand range. This function I have explained it to you. This is clear now. Okay, so you see random dot rand range 11 comma 45 comma 4. Okay, 11 comma 45 comma 4. So what does it mean? So 11 plus 5 4 15 plus 4 19, and in the same way in the step 4, if you take the set of values lying between 11 and 45, all from that set any number will be generated with the help of this. Okay, now let us move to the next thing. Next thing is next question is this: import random. Here you see this is the question. Random dot randint 3 comma 10 minus 3. Okay, so what will it print actually? See, 3 comma 10. So any random number that you may think out of from 3 to 10, means 3 4 5 6 7 8 9 10. Any number, if you think out of these, you can think of that and you subtract 3 from that number. So the number you will find, that will be the maybe the output. Okay, you can see here minimum possible number is 0. Okay, because 3 minus 3 is 0, so 0 will be generated. And last is 10. So 10 minus 3 is 7. So 7 can also be maximum number is 7 and minimum is 0 when you use this complete function. Okay, now this is over. ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? और ये भी आउटपुट मैथ मॉड्यूल, अच्छा मैथ मॉड्यूल और है आपका। इसमें मैथ मॉड्यूल में आपके बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आपको सिलेबस में है, जो आप यूज कर सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा। इसमें मैं एक लिस्ट है जो आपको समझा देंगे, ठीक है? आपकी बुक में दी हुई है लिस्ट ऑफ फंक्शंस। ऑलराइट, मैथ मॉड्यूल के इसमें जैसे है आपका सील फंक्शन है, SQRT फंक्शन है, वो आपके मैं बुक से लिस्ट आपकी दी हुई है। आप उन फंक्शंस को पढ़िएगा और उनको यूज करिएगा। वो मैं आपको पहले करा चुका हूं, ठीक है, मैथ मॉड्यूल का यूज करके। गॉट द पॉइंट? सो हियर ये जैसे एग्जांपल 28 है, इसको आप घर पे करिएगा, एग्जांपल 28। ओके, ये रैंडम फंक्शन का यूज। गॉट द पॉइंट? द मॉड्यूल नेम इज स्टैटिस्टिक्स। इस स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के 3 फंक्शंस आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, और वो 3 फंक्शंस के नाम है मीन, मीडियन और मोड। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट पाइथन कोडिंग से समझाता हूं, ठीक है? पाइथन कोडिंग से क्लियर करते हैं। आई विल इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। ओके, आई विल इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल and then we will use mean, median and mode. Okay, so I will explain you how in what ways we can do it. Okay, so see, कौन सा मॉड्यूल हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि रैंडम वगैरह हम कर चुके, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल, ठीक है? सो दिस इज योर पाइथन shell, and in this shell, see, there are 2 ways to import the module and then use them. Okay, see, first thing, I am using import. Okay, and the module name is statics, statistics. Okay, so import statistics, ये मैंने मॉड्यूल किया। अगर इसमें स्पेलिंग गलत करूंगा मैं, सपोज मैंने स्पेलिंग गलत किया तो ये एरर आ जाएगी, ठीक है? सो मॉड्यूल नेम शुड बी करेक्ट वन, और मैंने यहाँ पर ये किया तो नो एरर, इट मींस इंपोर्ट हो गया। नाउ आफ्टर दैट, इसके मुझे 3 फंक्शंस यूज करने हैं। पहला फंक्शन है आपका, फर्स्ट फंक्शन कौन कौन से?
फर्स्ट फंक्शन है, हम यूज करेंगे मीन, ओके। दूसरा फंक्शन मीडियन, और थर्ड नेक्स्ट फंक्शन mode, okay. So mean, median and mode. All right, so you see now here I have to use first the sequence, means list tuple में से कुछ हमको ये सीक्वेंस यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने सपोज लिस्ट लिया x इज इक्वल टू, आई राइट हियर x इज इक्वल टू, suppose I take simple value 7, 2, 7, 3, 7, 4, 5, 7, 6, 3, 6, 10, 7, 8. All right, ये values है. Now I have entered it. Now after importing this module, now first function I will use mean. So how can I use the function mean? Before using mean, I have to use the module name. So statis okay, statistics dot mean, and then I use x, and then I press enter. So it is giving 5.727 this value. How will it work? It actually finds the mean, means what is the mean purpose of mean, that is average. So it will count all the number, it will add all the numbers, the sum of all the numbers from in this particular list, and then divided by number of elements, that is the length. Means what actually it does sum of x and then divide by length of x. This is actually it works in this way, but here it will not work because yes, you see sum function आपने किया था, sum, ठीक है, सम आपको एक्सप्लेन किया था और उसी तरह से मैंने इसकी लेंथ निकाली, तो ये देखिए दोनों का रिजल्ट सेम आया है, ठीक है। सो इट एक्चुअली गिव्स दिस वन. सो मीन हो गया आपको क्लियर बच्चों? मीन क्लियर हो गया? मीन मीन्स एवरेज. यस, टेल मी, हो गया क्लियर? यस, Yes. okay, fine. So now next is median. What we do? Median. So see, I am just giving you what is median. Median means it's mid value, okay, mid value. Now see, I am writing here the function, okay. Here I write see, I will use this median in a different way, okay. In a different way means this is also the way you are using, okay. Now see, I'm importing the same module, but I use its alias rather than writing statistics, okay. So you see, I just close it and open the IDLE again, okay, and opening the IDLE again, you see import import, okay, STATIS statistics, import statistics. Now you see this statistics word is very lengthy, so I can use my own alias as, okay, as. This is another way. That way was also there for finding median, mode, or mean. You can use any function like using statistics dot mean, statistics dot median, statistics dot mode, okay. But I'm not convenient with writing statistics again and again, okay. So I can use it in this manner, import statistics as. Now I write here sta, okay. Now I enter. Now in place of statistics writing again and again, I can use sta, right? It's
इट्स अलाइस, इसका दूसरा नाम है, हमने ले लिया अपने, ठीक है, बना लिया। अब मैं एक काम करता हूँ, एक्स को फिर से लिखा, ओके, और इसमें मैंने वैल्यूज देना शुरू किया, 7,5,7,4,3,2,7,7,1,8, ओके, ये वैल्यूज दिया, राइट। अब मैं इसका मीन आपको समझा चुका हूं, मैं मीडियन निकालूंगा, ठीक है, मीडियन। नाउ यू सी आई राइट हियर STA डॉट मीडियन एंड देन आई टेक हियर एक्स। अब देखिए मैंने क्या किया है, इन प्लेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स आई हैव यूज्ड इट्स अलाइस नेम STA, ऑल राइट, I have used its alias name STA. Okay, now I press enter. It is giving 5.5. Okay, median is 5.5. So this is actually mid value. 5.5. It is a mid value. How it is giving the mid value? It's giving us the mid value in this manner. See, if you arrange them in this fashion, okay, see, if you write here like this, you see the smallest one 1 comma, then next value is 2 comma 2, then next value is comma 3, then next value is comma 4, then after that comma 5, then again 5, then after this it's 6, then after that comma 7, okay, and one more 7, and then one more 7, 7 7, and then one more 7, and then after that comma 8, after that comma 8, okay. So you see it's coming out something like these values, okay. Now how will you find median? How will you find median? See, its total number of values 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Here also you see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, and then one more is missing over here that I could not find out which value is not there. सी कुछ भी होगा, मीन्स आपको मैं समझा दूं इसमें डायरेक्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आप यहाँ से इसके वैल्यूज को देखिए यहाँ से यहाँ तक, और इसमें मिड वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो टोटल वैल्यूज आर दिस वन, और इसमें मिडिल में जो वैल्यू आ रही है इट्स कमिंग आउट टू बी हेयर, ओके। सो 5.5 इट इज कंसिडरिंग फ्रॉम हेयर। मैं इसमें कोई एक वैल्यू मिस कर गया हूँ, आप समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें मिड वैल्यू का मतलब है कि एवरेज नहीं निकालना है, ठीक है, मीन नहीं है। आप इसको अरेंज कर लीजिए और सेंटर में जो वैल्यू आ रही है उसके अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ये आपको देना है। सो दिस इज 5.5, it is coming out as median. Got it? So hope you have understood. Now after that आपको समझ में आ गया बेटा, मीडियन भी क्लियर हो गया। ये एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स का है, लेकिन ये आउटपुट के क्वेश्चंस में आ सकता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। नाउ ये आपको मीडियन भी क्लियर हो गया। अब मैं आपको समझाऊंगा हाउ कैन यू यूज दिस द सेम थिंग इन डिफरेंट वे, ओके। सी, अब मैं क्या करता हूं, मैं इंपोर्ट करता हूं स्टैटिस्टिक्स, ओके। अब इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स नहीं करता, मुझे ये STA बार बार लगाना पड़ रहा है। आई कैन इंपोर्ट सिंपली द फंक्शन ऑफ अ मॉड्यूल रादर देन इंपोर्टिंग द होल मॉड्यूल, ओके। तो आई कैन यूज हियर फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स, ओके, फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स इंपोर्ट। याद रहेगा आपको, इंपोर्ट कर रहे हैं हम फंक्शन, मॉड्यूल नहीं, लेकिन किस मॉड्यूल से? स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल से। सो वी आर यूजिंग फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स इंपोर्ट विच मॉड्यूल आई एम गोइंग टू इंपोर्ट। मैं इंपोर्ट करने जा रहा हूं मोड, ठीक है, ठीक है।
अगर मुझे तीनों फंक्शन दो फंक्शंस लेने तो आई कैन राइट हियर मेन कॉमा MODE, दो फंक्शन भी कॉमा लगा के कॉमा MODE दोनों फंक्शंस इंपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और कोई फंक्शन लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। सो हमने यहाँ पर फंक्शन इंपोर्ट कर रहे हैं MODE, सिंपल, ठीक है। नाउ आई प्रेस एंटर। नाउ यू वॉच, पहले हमने पूरा स्टैटिस्टिक्स को यूज किया था डॉट लगा के, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका लिया अलायस, तो अलायस नेम यूज किया। अब मैंने सीधे डायरेक्ट फंक्शन इंपोर्ट कर लिया है, सो आई नीड नॉट टू राइट द मॉड्यूल नेम, ओके। आई नीड नॉट टू राइट हियर STATICTICS, I need not to write statistics dot mode, okay. I can directly write mode, and inside that I can use X, and then I press enter. Now you see it is giving 7. It is giving 7. So what is mode? What is mode? Mode is actually the most repeated value, okay. MODE. Mode is the most repeated value in the sequence. You have understood this thing? So you see in this particular example, you see 7 is coming out 1, 2, 3, 4 and 5. 7 is coming out 5 times, maximum number of times it is repeating. So that's why the repeated number, that is most times number of times it is repeating, is 7. So mode है इसमें 7. मीडियन आपको पहले क्लियर कर दिया, और मीन आपको एज यूजुअल मालूम है कि दैट इज एवरेज, ओके। अब एक चीज और एग्जांपल देता हूं मैं आपको समझाता हूं कि ये मैंने, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, ये यहाँ पर 7 है, ठीक है। मैं अब एक काम करता हूँ, मैं दो वैल्यूज लेता हूँ और इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करते हैं, ओके। X इक्वल टू, आई राइट हियर 5, 5, 5, 5, okay. 4 times 5 is repeating. Then I take 4, 8, 7, okay. And then after comma, I take here 2, and 2 again I repeat 4 times. 2, 2, 2, 2, okay. So you see in this particular list, two values are repeating maximum number of times. एक तो 5 आ रहा है 4 times और दूसरा 4 times 2 आ रहा है. Now I write here mode X. Okay, I write here mode X. So you see what will be the mode, either 5 or 2, but the reason is only single value is required. So if you press enter, it is giving the error, and the error is this because mode cannot be found out. इस केस में इस लिस्ट में मोड नहीं निकल सकता क्योंकि 5 4 टाइम्स है और इसी तरह से 2 भी 4 टाइम्स है और दोनों में रिपीटिशन 4 टाइम्स हो रहा है और 4 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स है. दैट्स व्हाई द मोड इज गेटिंग कंफ्यूज्ड, सो इट इज नॉट गिविंग द आंसर. ओके, सो मीन, mode or median I have explained you using the statistics module. Is it okay? Is this clear? And I have also explained you the ways to use the modules. First way is directly using importing direct module name. Second way, using the alias name. Third way, directly importing the function. This is the from लगा के, ठीक है. So आप direct import कर सकते हैं function, तो इसमें आपको मॉड्यूल का नाम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है. तो आपको होप ये क्लियर हो गया होगा. बच्चों क्लियर हो गया ये? 3 functions are clear to you? Yes? आवाज आ रही है मेरी? ओके फाइन. सो अब मैं आपको ये मॉड्यूल समझा दिया हूं और अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस, ये आपने इसमें सॉल्व दिए हुए हैं एग्जांपल्स, आप इसको करिएगा, बुक में सॉल्व करके समझाया हुआ है. ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका, सी हियर इट इज इन दिस सॉल्यूशन, इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स. ये तो सॉल्यूशन है, ये तो इसमें जैसे ये इसका आउटपुट देखिए, हियर इट इज. इस लिस्ट में ये लिस्ट दिया हुआ है. मीन आपको पता है, मीडियन.
मीडियन क्या होना चाहिए, मिडिल वैल्यू। ओके, सो मिडिल वैल्यू आ रही है 22। ओके, मिडिल वैल्यू 22। सो सी हाउ इट इज गेटिंग 22। मैं इसको अरेंज करता हूं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में। सो आई राइट हियर 7 कॉमा, देन नेक्स्ट इज 13 कॉमा 13 कॉमा, देन 2 टाइम्स 13 हो गया, फिर 2 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स हो रहा है 13, और फिर आपका आ रहा है 13 के बाद क्या है 22, देन अगेन 22, और उसके बाद में नेक्स्ट आ रहा है आई थिंक 25, और फिर 28। ओके, तो ये वैल्यूज आ रही हैं आपकी, और इन वैल्यूज को अगर आप देखते हैं तो मिड में इसको इधर रखिए, और अराउंड ये कितने हैं 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, और इसको रखिए, इसमें एक आध कोई वैल्यू कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें एक कोई वैल्यू चली गई। आपको दिख रहा है इसमें 25 टू टाइम्स है सर। 25 टू टाइम्स है। ओके, राइट राइट। सो 25 टू टाइम्स है, तो मैंने यहाँ पर लिखा कॉमा 25। ओके, सो आप इसमें देख रहे होंगे कि मीडियन जो है 22 आ जाएगा, बिकॉज व्हेन यू टेक हियर ये आपका 4 इधर है और 4 वैल्यूज इधर है, बीच में ये 22 आ गया, सो दिस इज मीडियन। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट। और इसमें मोड है 13, वाई, बिकॉज 13 सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है। सो दिस एग्जाम्पल इज क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट इज जस्ट ए मिनट। ओके, अब हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा ही टाइम बचा है, ये डिबगिंग वगैरह नहीं करना है, ये आपको हो गया। ये कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझाता हूँ। ये जैसे क्वेश्चन नंबर सी, ये आप घर पे करिएगा और मुझे समझाइएगा, ठीक है। एंड हियर यू सी first question number 21. We are doing question number 21. Consider the code given below. Okay, random.randrange 100 से 999 और 5 में, ठीक है। ऐसे ही दूसरा प्रिंट है, ये दूसरा रैंड रेंज में प्रिंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल आउटकम्स, इन चार में से कौन सा आउटपुट सही है। तो आप देखिएगा इसमें 5 के स्टेप में जाना है, ठीक है। तो इसमें ऑड वन आउट करके आप इसको सॉल्व करेंगे, मींस इसमें कौन सी चीज नहीं आ सकती। देखिए इसमें 100 से 999 तक है और 5 की रेंज में है, ठीक है। तो 5 की रेंज में है तो 655 चलेगा, 380 चलेगा। ओके, 100 भी आ सकता है 5 की रेंज में, 345 भी आ सकता है। नेक्स्ट सेकंड लाइन में प्रिंट हो रहा है ये। अब आप देखिए 705 रहेगा, 382 नहीं हो सकता 5 के स्टेप में, तो ये ऑप्शन आपका कट हो गया, ठीक है। थर्ड है आपका 5 की रेंज में, सो 220 रहेगा, 505 रहेगा, 999 नहीं रह सकता, तो ये सी ऑप्शन भी कट हो गया। सो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए